Okay, I guess we are live. Let's see. ऑलराइट, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में। आज हमारा तीसरा दिन है। जब हम बिल्ड कर रहे थे अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, राइट, which was inspired from this Mac OS thing. Let me quickly zoom out. Yep. तो पहले 2 दिन में हमने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का स्कोप समझा, हम क्या क्या डेवलप करने वाले हैं, क्या, राइट। उसके बाद हमने इनिशियलाइज किया। फर्स्ट डे हमने फर्स्ट एमवीपी फीचर अपना लॉन्च किया था। सेकेंड डे हमने टर्मिनल बनाना शुरू किया था, द सेकेंड एमवीपी फीचर, जिसमें वी आर गोना यूज दिस यूआई, आई मीन वी आर गोना बिल्ड दिस यूआई, राइट। आज बिफोर स्टार्टिंग आई हैव फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट, जो विच आई वाज थिंकिंग के देयर इज गैप, राइट, के there has been gap in last 2 days. So first is Turborepo. So I told you in the first video that why I'm using Turborepo, but there was not enough. I believe there was not enough discussion on Turborepo. So I'll quickly take 10 minutes or so and discuss Turborepo, mono repos and all. To those people who don't know about it, and for those people who know, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, because see, this channel, this whole thing, coming live and streaming, it's about लर्निंग इन पब्लिक एंड बिल्डिंग इन पब्लिक। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता ही है और मैं किसी को इम्पार्ट कर रहा हूँ नॉलेज, नहीं। आई एम हेयर लर्निंग एंड देन कोडिंग एंड बिल्डिंग इन पब्लिक बेसिकली, राइट। तो ये मैंने आज सुबह डॉग्स देखे हैं, तो क्विकली लेट यू नो, टेल यू कि क्या क्या इसमें है। तो इफ समवन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर किसी को आता है तो प्लीज करेक्ट मी, राइट। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ you correct me and share your knowledge with me. So turbo repo basically mono repo, I believe you should be knowing mono repo. अगर mono repo नहीं आता है तो आप प्लीज वो देख के आओ turbo repo। तो turbo repo is a tool which we use to work with mono repo। जैसे React is a framework or React is a library which we use to work and build front end pages. Similarly, Turborepo is a framework which we use to build monorepos. Correct? Now, so when abhi I have modified the code which we get, boilerplate code which we get when we install Turborepo. But here we have an example जो कि Turborepo के official GitHub पे ही है। तो यहाँ पे
we'll take the basic example जो कि हमारा इंस्टॉल होके आता है. So there were two folders, apps, packages, and then there were few files. Alright, तो let's quickly talk about इसमें क्या होता है. तो apps is basically a folder which will contain all of your apps as name suggests. So it could be a front end app, it could be your back end server, it could be a full stack framework, it could be anything, right? Since I believe we are, we'll take a microservices architecture to work with monorepos. तो एप्स में आप अपनी सारी सर्विसेज होस्ट कर सकते हो. तो बाय डिफॉल्ट दो आती हैं, डॉक्स एंड वेब. डॉक्स इज अ नेक्स्ट ऐप जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन होस्ट कर सकते हो. वेब इज अगेन नेक्स्ट ऐप, राइट. तो ये होता है यहाँ पे. वी हैव डिलीटेड द बॉयलर प्लेट. एज यू कैन सी एप्स में हमने अपना अपना मैक ओएस पोर्टफोलियो करके फोल्डर बनाया विच इज अगेन अ नेक्स्ट.जेएस ऐप. तो यहाँ पे आप अपने सारे एप्स बनाते हैं. देन कम्स द पैकेजेस फोल्डर. तो पैकेजेस फोल्डर क्या होता है? हेयर लेट मी क्विकली क्लोज. हाँ, हेयर वी हैव थ्री सब फोल्डर्स. तो पैकेजेस में बेसिकली क्या होता है? हेयर वी डेवलप things which is commonly shared by all the different apps which are in apps folder. जैसे कि let me quickly show you UI में in the boilerplate code, as you can see, we created a button and we are exporting button, right? uh, Sorry, yeah, but I said it is shared by the it is shared by the different apps. So if we go to the page tsx page file of our web app in apps folder, you see we have this button which is imported from at the rate repo slash ui slash button. ठीक है. तो बेसिकली अपने इसमें क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ, पैकेजेस फोल्डर में यूआई से हमने वो किया. कैसे? सो इफ वी गो टू द package.json of our web app, you can see we are importing a dependency named repo @repo ui, जिसका we are importing. Now if you go to back to the packages folder ui button, right? So here we are exporting this button as a component which is published as a package. You can see we have this @repo. तो हमने ये पैकेज @repo hyphen slash ui पब्लिश कर दिया, जिसमें we have this button export और तो फिर and then when we came back when we went back to the app, we firstly imported this package @repo ui और उसके अंदर से फिर हमने बटन को import कर लिया and we used. सिमिलरली अभी मैंने कहा था कि शेयर्ड होता है व्हाट बिटवीन ऑल दी एप्स. मतलब जरूरी नहीं है कि सब में हो ही. इट्स अप टू मान लो 3 में ही हो, 5 में से, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बट टू शो यू page.tsx of doc, again you can see we are importing button from repo ui in the same way as we did in our app, right? देन यूआई में जनरली यूआई कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे बटन हो गया एंड देयर आर अदर्स एज वेल. कार्ड कोड मीन इट्स वेरी इट्स बॉयलर प्लेट, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. देन वी हैव ESLint config and TypeScript config. So basically if you are using TypeScript in your apps और app, तो आप अपना सारा उसका कॉन्फ़िगरेशन TypeScript का एक इस फोल्डर में रख सकते हैं. एंड इन package.json आप उसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, ऐसे करके @repo TypeScript config. एंड सिमिलरली जैसे हमने repo ui को यूज किया था, सिमिलरली वी विल यूज TypeScript config इंपोर्ट करके. सिमिलरली जैसे TypeScript config है, ऐसे ही ESLint config है. यहाँ पे lint के सारे configs हैं, package.json से आप पब्लिश करते हो,
ऐप या किसी भी ऐप में जाके आप उसे इंपोर्ट करोगे और यूज करोगे, राइट। तो ये हो गए आपके पैकेजेस। दीज आर नॉट लिमिटेड टू दिस, यू कैन वॉट एवर कॉम्पोनेंट विच इज शेयर्ड, आप उसका एक पैकेज बना के पैकेजेस में डाल सकते हो। कमिंग टू दीज फाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले विल टेक अ लुक एट turbo.json। तो turbo.json इज बेसिकली अ कॉन्फिग फाइल फॉर टर्बो रिपो। तो यहाँ पे आपके पाइपलाइन में डिफरेंट कमांड्स होते हैं, बिल्ड, लिंट, डेव, जिनके आप रूल्स डिफाइन करते हो। जैसे लेट्स से बिल्ड है तो उसका यू नो दिस, जैसे डेव है, डेव में आपको मान लो कैच नहीं करना होता है, कैश नहीं करना होता है, बिकॉज so that's why we put it false, right? So similarly we have different concepts for different commands। उसके बाद हाँ, ps config। तो जैसे कि मैंने कहा था कि which is imported from सारी आपकी टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन एक जगह होती है, मतलब रख सकते हो, यहाँ पे रख दी और base.json में हमने उसे इंपोर्ट कर लिया। package.json इज अ सिंपल आपकी टर्बोरिपो की पैकेज फाइल है ना। इसमें आप और स्क्रिप्ट्स में वो लिख सकते हैं एंड विल ऑब्वियसली कस्टमाइज स्क्रिप्ट्स एज पर आवर नीड। जब हमारा प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, दिस टर्बोरिपो विल ग्रो। जब एज आई टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो कि मैं अपने सारे एप्स, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, import them under this turborepo, so or everything is at one place। so tab you will see me doing things with this, right। git ignore, again आपका git ignore फाइल होती है, ये तो पता ही होगा। अगेन ESLint में you can see extends, repo, ESLint config और library.js। so again we are importing our ESLint configuration from that package। तो ये होता है बेसिकली आपका टर्बो रिपो का ओवरव्यू। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन reading about it more, I'm sharing the link। Obviously you can go to the वो, or maybe if you want to just go with the link, आप लिंक में ये देख सकते हैं, तो you can read more about it, ठीक है। तो close this। now you'll say कि भाई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लेते हैं। मैं I'll say कि let's focus on building our Mac OS as of now, right। our portfolio website, and we eventually जब will be migrating our other projects, तब हम एक साथ बैठ के उसका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी जितना as I told you, I'm gonna take the MVP way, so उस हिसाब से होगा। ऑल राइट, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांटेड टू talk about। Now I need 5 more minutes from you, and we'll quickly talk about few more things। First is second, basically first was turbo repo, second is setting up the tone of the project। So अब तक I was on first day I was very excited कि मैंने मेन ब्रांच में ही कोड करना शुरू कर दिया था, but it is not how people generally do। I mean, if you are working in an org and all, people generally create their branches, different branches। Obviously there are there is a branching वो strategy, and then they work on it so that आपका main, let's say if you mess it up someday, तो आपका main hurt now and you hurt only a branch, so your main prod is safe। so that's what we are gonna do। What we are gonna do is, what am I gonna do is, I'm gonna build different branches according to the different what you call MVP features। let me quickly go to the features.md। okay, तो हर फीचर के लिए मैं अलग ब्रांच बनाऊंगा और मैं उसको मर्ज करता रहूंगा जैसे जैसे फीचर कंप्लीट होता रहेगा। ओके, सो दैट वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, लेट मी क्विकली, हाँ, ओके, थर्ड थिंग। तो अब तक दिस वाज सेटिंग अप द टोन। थर्ड थिंग इज yesterday, if you remember, we were getting an error यहाँ पे, राइट। let me quickly, sorry, should be npm run dev। okay, हाँ, one quick thing I want to tell you।
जो मेरा रह गया था टर्बो रिपो में, which was package.json of turbo repo. So as you can see, is a script build dev lint format. There are char script, right? How does this work? So what it does is when you run npm run dev, so it runs turbo dev. What it does is ये आपके एप्स में जाएगा और आपके एप्स में लेट्स से अपने पास फिलहाल एक ही है जैसे, तो इट गो हियर एंड इट विल लुक इन package.json कि कोई dev कमांड है क्या. अगर है तो इट विल रन dev कमांड ऑफ दैट पैकेज, ऑफ दैट ऐप. लेट्स सी यू हैव 10 एप्स, जिसमें 8 में आपके पास dev कमांड है, 2 में नहीं है, तो वो आठों के 10 में जाके इटरेट करेगा और 8 बार उसे जब जब dev मिलेगा वो उस dev कमांड को चला देगा. और बाकी दो के लिए इट विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज package.json में कुछ नहीं है. So as you can see, let me quickly show you. I fired up npm run dev, जिसने dev command करी, turbo dev चला. Now you can see it is showing me Mac OS portfolio dev. What this means is इसने Mac OS portfolio का dev command चलाया है, and as you can see when you run npm run dev in next, this is the thing you see, right? So what I wanna show you here is yesterday का एक चीज. Yesterday we were getting an error जब I was trying to uh, I was trying to do this function export default function, right? Now it will throw an error. यहाँ पे error आ रहा था. मैंने थोड़ा तब देखने की कोशिश की थी, but I was not able to figure out ऐसा क्यों हो रहा है. तो जब मैं ऐसे शांति से बैठ के अपना देखा तो I saw I'm using curly brackets here. Now when you are using curly brackets क्या होता है, you cannot use default. I mean there are multiple exports होते हैं, तब आप generally curly brackets use करते हो, but with default you don't use this curly brackets. So if I just quickly remove this, voila, we have this. Now as I told you, we are gonna use branching strategy. Right, we are gonna branch for different row. Let me quickly go close the server and let me quickly, yeah, create branches. So git checkout, not main of course, uh, branch 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 name हम रखेंगे Mac OS portfolio का. We are developing MVP 02. What this means कि Mac OS app में we are building second feature because there will be multiple apps and there will be features. तो हम उसके हिसाब से will follow this. Give me a second, guys. Give me a second, guys. I'll just be back. Yeah, sorry. हाँ, तो हम branch बना रहे थे. Let me quickly create the branch. Okay, new branch बन गया है.
नाउ हम इसमें छेड़खानी करेंगे, राइट। लेट मी जस्ट क्विकली, हाँ हम अभी काम under will shoot everything on its own. We go here, perfect. तो सबसे पहले तो हम किसी चीज को फिक्स करेंगे। Now since it is a bug, export default function. Okay, what is right? So this would be our first commit in this branch, and accordingly we are gonna change the versioning. तो हमें वर्जनिंग का भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो दिस वुड बी 0.20.1 because it's a bug, right? And let's quickly let's quickly, I mean of course this is not the right way if I'm not wrong, क्योंकि अगर हमने यहाँ चेंज किया है तो पैकेज जेसन के साथ एक फाइल और होती है। एक सेकंड यार, कुछ तो गड़बड़ है मेरे दोस्त। Why I don't have any note module in this? Wow. So as of now, let's just do it this way. I'll अगर किसी को पता है how to do the versioning exactly, please let me know. Like I'll try to figure it out tomorrow and then कल शाम बैठ के we'll fix it. So we'll commit and push this and fixing the date time component array. It was wrongly imported. Export default also uh, implemented. सॉरी अगर अब तक मेरी आवाज कम आ रही हो, फॉरगॉट टू पुट इन द माइक प्रॉपर्ली। Yeah, and we are gonna shift control home delete control S control W and you pushed it. Cool. Of course. And we are gonna insert our terminal here. अरे यार सॉरी सॉरी माय फ्रेंड्स। या तो आज का गोल रहेगा हम कमांड्स वाला पार्ट फटाफट से कर लें। कंपोनेंट्स में जाएंगे, टर्मिनल टाइप नॉट एग्जैक्टली यू माय फ्रेंड। सबसे पहले टर्मिनल, टर्मिनल टाइटल, टर्मिनल बॉडी, क्या एंड लेट्स सी बट आई ऑलरेडी फायर्ड इट अप राइट। कंपाइलिंग में टाइम लग रहा है। क्या गलत है? अरे इंपोर्ट कैसे नहीं हुआ? I believe, yeah, okay, this is a little messed up. Why so? Header में है क्योंकि and it should not be in header.
गलत जगह लिख दिया है. Yep, it should be here. Cool. Yeah. So far so good. Okay दोस्तों. तो yesterday what I was thinking, हम थे input में, right? And we got this. Okay. Let's. Cool. That is great, right? And yeah. तो क्या होगा? This will show up. यहाँ पे यूजर अपना कुछ कमांड लिखेगा and will hit press enter. Of course हमें enter की का वो ऑन की डाउन इवेंट में हमें वो चेंज करना होगा हाउ इट जनरली बिहेव्स. बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू डू इज, हाँ, लेट मी क्विकली, मैं कल ये ट्रायंगल भी इंप्लीमेंट करना चाहता बट आई वर नॉट एबल टू, राइट? सो व्हाट आई डिड इन द मॉर्निंग, दैट स्ट्रीम का टाइम वेस्ट ना हो. हाँ, व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक ट्रायंगल इमेज ले ली एंड नाउ वी आर गोना यूज इट. तो उसके लिए we are gonna use the image tag of Next.js because it's more efficient. Quite a few technicalities. Triangle. I don't know, dude, but let's see. Okay, cool. Now we are gonna decrease the size. 20-20 कर लेते हैं. Let's see कहाँ तक जाता है. Seems fine to me, but थोड़ा सा CSS fix करना पड़ेगा, of course. Okay, let's see. ये अपना ये हो गया अपना आउटर डिव. इसके अंदर वी आर गोना यूज अ पैराग्राफ. वेट वेट अ सेकंड. आउटर डिव हो गया जिसमें अपना सब ये वर्ड अक्षर दर्ज आएगा और इमेज आएगी. फॉर दैट गोना यूज p node cost not u, and we are gonna use flex here और p को लेके आएंगे हम ऊपर. cool, much better. कुछ तो गड़बड़ है. width fit. हाँ, सी, इट इज गेटिंग बेटर, राइट? अब मैं अगर इसमें हल्का सा मार्जिन राइट यूज कर लूँ 2 का, आई बिलीव आई शुड बी एबल टू हियर. कूल. जस्ट गॉट to fix the height and width only. हाइट विड्थ में 90 ज्यादा है. एक यार, हाइट क्यों नहीं कम हो रही है इसकी? हाँ, 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 हाँ.
हाइट ऑटो कौन सेट कर रहा है भाई? Or do I do one thing? Let me quickly do this. Last name bg black. bg black. हाँ, इसको करेंगे क्या, हम हाइट और विड्थ इसको देंगे और इमेज में डाल देते हैं हम फिल विड्थ हाइट फिल। Something weird did happen. Okay, okay. Okay, because उसकी हाइट नहीं दी है हमने, probably size 2. Yes, this is what I was thinking to do. Size 5 looks good to me. Looks good to me, but अगर हम थोड़ा सा उसे increase कर सकते, give me a second, friends. I believe this is good. No, is it? Is it not? Looks good to me. Looks good to me. All is uh, items center. Yeah, looks good. Cool. Now, sorry, the wrong key. Now, if we put it yellow 400, should show it like this. Okay, again, not you. Put it here so that it matches, and it should be padding much better. Size 6. किसका साइज 6 कर दिया मैंने? वो कैसे ब्रेक होगा? ओके, उसकी विड्थ बढ़ गई क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी हाइट अच्छी सेट करनी पड़ेगी. हाइट 6, विड्थ 5. एंड इफ वी रिमूव विड्थ ब्लैक, yeah, kind of do it. 2000. This looks good to me, you know. हाइट हल्की सी कम कर दें तो मजा आ जाएगा. कितनी है हाइट? 6, 1 24 पिक्सल ना. लेट्स डू इट 22 पिक्सल.
Let's do 5 months. ज़्यादा कम हो गया. Let's do it 22 pixel, 23 pixel. Let's just leave it at 6. Looks good. Now tell me, yeah, यहाँ से हमने ले लिया input. Okay, right. Now we are gonna active none input. Oh, wanted to. Active focus target over visited focus visitor. Okay, okay, okay. Uh, Border none. Yep, looks better. Cool. Okay, so this is fixed. This is much better. This looks much more promising. Cool. Right? Now, no, 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 no. What is the next step? Next step is defining a set of commands
एंड अकॉर्डिंगली उसके लिए हमें क्या ऐड करना है इन दी फॉलोइंग डिव, राइट। तो अब थोड़ा होगा जावास्क्रिप्ट का खेल। कंपोनेंट्स में I can create a new file which would be of type JSON, जिसमें would be an array, no, how it would be name, command name. Uh, so there would be a command clear, of course, right? Uh, be an array object, जहाँ पे नाम होगा और मैसेज होगा clear the screen. There will be another command name help, कमांड का नाम होगा हेल्प और इसमें हम मैसेज दिखाएंगे। मैसेज क्या कमाएंगे, लिस्ट ऑल दी कमांड्स, ठीक है। राइट, करेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, राइट। एंड देन देयर विल बी अदर कमांड्स एज वेल। देयर विल बी अ कमांड व्हिच विल टेल अबाउट मी, तो उसके लिए हम रखेंगे नेम कमांड का अबाउट, ठीक है। और उसका मैसेज होगा about अक्षर, that it will have a little o of me, and then there will be a command, अरे यार नेम, जिसका एजुकेशन के लिए मैसेज होगा, जिसका show education, and then there will be experience
experience and projects projects or a resume, of course. This will just download my resume, right? uh GitHub. It will open GitHub, and then quickly copy this LinkedIn, uh X, formerly Twitter, Twitter, ठीक है। और क्या 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 गिटहब जो पोर्टफोलियो पे तो है ही हम। क्लियर हो गई, हेल्प हो गई अबाउट एजुकेशन। लेट मी क्विकली गो टू अक्षत। मेरा पोर्टफोलियो कहाँ है? work.com. This is my domain which I bought. Okay, I have put this resume. Resume, skills, of course, skills. How can I forget skills? Education about के बाद ठीक है, skills, skills कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉबीज लेट इट बी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? थिंक अबाउट इट। कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? एवरीथिंग इज देयर व्हिच कैन द गाइड कॉन्टैक्ट मी अबाउट। मेल डाल सकते हैं। तो ये मेजर हमारी कमांड्स रहेंगी। इसको अल्फाबेटिकली, ओके, अबाउट, स्किल्स हो गए, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, resume, not show, it should be download resume, right? GitHub, LinkedIn, Twitter, email. Okay, let me quickly grab import command from commands.json console.log commands. Yeah, so we have 12 skills, 12 commands. The user will put one of these command in here and will press enter, and it should come to us on key dump.
की हो गई एंटर। Okay, that is console, right? प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे हम, and of course we are gonna get the value of, tell me a thing. Let's say write help and I press enter. So it will get me the same thing now. Why I am bothering myself with on change? When not prevent default, switch case statement, not key if the value is, इस पे डालो ये केस लगाओ डिफरेंट कीज का, नहीं एरे में स्विच एरे है ना, आई थिंक दैट इज एन एरे। ओके, तो कमांड्स डॉट फिल्टर आइटम item dot name is equals to new dot target dot value, so it will return the whole item out of it, right? But if this is true, just need the command, right? Okay, this won't work. Think guys, think, यूजर ने यहाँ पे अपना कमांड लिखी, ही प्रेस्ड एंटर, हमारे पास हेल्प आ गया। अब हेल्प पे हमें क्या चीज करनी है? ओके, हमें ओके, गॉट इट। What we have to do is we have to build different components
let's say if I build help command, इसमें लिख लेते हैं command dot jsx export default function return this is help command component help command करेक्ट। अगर की दबाई गई है एंटर, हम लगाएंगे स्विच केस किस पे, इवेंट टारगेट वैल्यू पे, और उसे मैच कराएंगे डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज से। तो लेट्स से इफ वी हैव वन ऑफ दोस कमांड्स टेस्टिंग के लिए, लेट्स कीप इट हेल्प हेल्प कमांड टर्मिनल बॉडी। अगर नॉट दिस वे हेल्प है तो व्हाट डू वी वांट इज व्हाट वी वांट इज let's see is the day background blue। ओके, बैकग्राउंड ब्लू, इसको देंगे हम कुछ आईडी, इसको देंगे हम आईडी टर्मिनल बॉडी बॉडी, इसको करेंगे कॉपी, क्या करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टर्मिनल बॉडी डॉट एड चाइल्ड अपेंड चाइल्ड। हाउ डू यू अपेंड द चाइल्ड? dom dot append child document dot create element text node there should be an append as well, right? Okay, append child is one which I've got with okay, हमें उसके लिए पहले वो बनाना पड़ेगा। तो let's create an element document dot create element const node is equal to document dot create element and it should be a div, right? है जी, कुछ भी केस हो क्योंकि it would be created। Right, let's quickly see। Yeah, so we have this div, what I've done is correct correct, right? Let me quickly tell you, wait a second, let me quickly, but the thing is help command
how can I append child use dot.
Food from wall. Let's see, friends, this works. Hey, Thomas, of course. Ah, yeah, let's go. But उसने क्या किया मेरे को but okay. But
keeping a track of all the arrays नहीं चाहिए kind of. तो उससे एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं. uh, अभी क्या क्या हो रहा है? We are rendering it while I want to append element in. Or can we do one thing here? Let's quickly try one thing. Just quickly refresh it. Uh, let's see. Uh, what I was thinking, what just came into my mind is we create a node, right? In case of all of this, just delete this document. No, you go away, you go away, you go away. Dot append child, and we call it node. Correct. But what if we just modify this div, right? Append child अभी आया था ना. You go away. Quickly, HTML append child. Yep. Yes. The thing is, I got the div add हो रहा है, right? But what if I can just quickly node dot inner text is equals to help command, alright, and then we just append it, correct? So let's quickly write help command. Cool. So what we can do is, instead of help command returning this as a component, what if it returns it as a string, right? And in terminal body, हमने help command import किया और यहाँ किया, and node dot inner text हो गया help command का function का जो भी return होगा, right? And let's just quickly refresh it. Help. Cool. So what we are gonna do is, we are gonna uh, what we are gonna do is, हम एक कमांड कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें will be returning. Okay, let me quickly show you what I'm thinking. I'm thinking is commands, but that is again command values, right? And it won't be yes, and it won't be returning a default. Why? Because help command में हमने return कर दिया, help command में हमें क्या क्या चाहिए, right? This is a help command component. Similarly, for some other command, let's say commands क्या क्या है हमारे पास दोस्तों? Clear about, right?
about about ठीक है. And in terminal body हम एक बनाएंगे div. Now depending on what case it is, we are gonna call different commands. Case जैसे मान लो about का हुआ, ठीक है, हमने इसमें बुला देनी है then about command, correct. Now this is eventually gonna get called, तो हम इसे बुलाएंगे इसके बाहर, ठीक है. ब्रेक कमांड को यहाँ करेंगे कॉल, डिफॉल्ट पे करेंगे एंड वी आर गोना ऐड दिस हियर. कूल. नाउ लेट्स क्विकली हेल्प. ओके, व्हाट इज द एरर? अच्छा हाँ, ये सेम यस्टरडे वाला एरर दोस्तों. ये आएगा इसमें एक और कमांड आएगी अबाउट कमांड, और इसको करेंगे ऐसे इंपोर्ट, और इधर मारेंगे रिफ्रेश, और इधर करेंगे हेल्प एंड वी विल डू इट अबाउट, तो हो जाएगा ये. ठीक है, तो हमारे को एक बेसिक आइडिया मिल गया है, बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है कि हाउ वी आर गोना इम्प्लीमेंट दिस. राइट दोस्तों, तो लेट्स क्विकली पुश इट. Quickly show me what are all the changes we have done. So obviously I'm gonna push this and terminal body में क्या क्या changes हुए हैं. Okay, terminal body में we don't need this anymore. First of all, commands, तुम पीछे आओ, इसको इंपोर्ट करो, इसको स्टेज करो ट्रायंगल को, ठीक है, और कमिट एंड पुश मारो. ठीक है, यहाँ पे हम देंगे स्टार्टिंग विद टर्मिनल बॉडी, शिफ्ट कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू. इन नेक्स्ट वन terminal, yeah, commit and push, starting with commands defined all the commands in commands.json build a skeleton on how to proceed with, how to deal with input command. Okay, control S, control W. Cool. And now what are we gonna do is, correct. Compare pull request. There is something wrong. I just wanna pull only one file. तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं. We'll create a PR tomorrow.
आज हमने वी अचीव्ड क्वाइट अ लॉट। हमने पहले टर्बो रिपो की बात की, देन हमने कल का जो वी सेट द टोन ऑफ हाउ विल स्टार्ट डेवलप द प्रोजेक्ट, देन वी फिक्स्ड yesterday's errors and then we started developing, and हमने quite significant process प्रोग्रेस करी। हमें कंपोनेंट्स ऐड करना आ गया। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू क्वाइट अ लॉट मोर थिंग्स, बट एक बेसिक स्केलेटन मिल गया है जहाँ से व्हाट वी कैन डू आइडिया मिल गया है। कल विल ट्राई टू अचीव अवर गोल ऑफ कंप्लीटिंग दिस कंपोनेंट। बाकी देखते हैं कल कमांड्स वाला फीचर एनी हाउ पब्लिश करने की पुश करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एंड या आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल। ठीक है दोस्तों, चलो राधे राधे।